Okay, so am I audible? Okay, so am I audible? Okay, so am I audible? Now, just confirm me once. Can you see me, hear me? Everything is audible, visible. Confirm me once. Everyone, and mark your presence first. Everyone, so first mark your presence. That how many people are there? Those who have attended the classes today. Please confirm me once that everything is audible and visible. Please confirm me once that everything is audible and visible. Please confirm me once that everything is audible and visible. Okay, so we are starting the class as people will gonna join the class. जो भी doubts हैं, I'm going to take the doubts. ठीक है? आई थिंक फोटो ज्यादा ही बड़ी आ रही है स्क्रीन में, आपको विजिबल चीजें कम होंगी. लेट मी फर्स्ट मिनिमाइज द फोटो. गिव मी सेकंड. कितना ठीक है? आई थिंक अभी सही है. ऑल ओके? टाइप यस if everything is okay. Type yes if everything is okay. So basically yesterday what we have covered, yesterday we have covered many things. So हमने बात किया था कि important day dates और themes के बारे में yesterday we have talked about. ठीक है? Now today we'll talk about the news of the science and tech. ठीक है? And apart from that we'll talk about the important exercises that held between the countries. Clear? Now, so first is India's first indigenous 32-bit microprocessor, जिसका नाम क्या है? माइक्रोप्रोसेसर चिप है, इसका नाम क्या है? विक्रम 3201. ठीक है? So what we have, India's first indigenous 32-bit microprocessor Vikram 3201. Clear? So this ये जो chip है, this chip, ठीक है ना? It is developed jointly by the ISRO's Vikram Sarabhai Space Center and Semiconductor Laboratory Mohali. So in option either you can get Semiconductor Mohali या तो आपको ये नाम मिलेगा, और you can get the name of the चंडीगढ़, यानी कि आपको चंडीगढ़ का नाम मिल सकता है, और either you can get the name of the चंडीगढ़ or you can get the name of the मोहाली. ठीक है ना? सो इट इज द मेक इन इंडिया, यानी कि टोटली ये इंडिया में बनी हुई है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजिनस? इंडिजिनस, द मीनिंग ऑफ इंडिजिनस इज समथिंग व्हिच इज मेड इन इंडिया. मेड इन इंडिया. ठीक, समथिंग व्हिच इज मेड इन इंडिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिजिनस बोलते हैं. ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? इट इज द इंडिजिनस मींस मेक मेड इन इंडिया. मेड इन इंडिया. बेसिकली जब भी हम बात करते हैं चिप की,
तो अच्छा पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो दिस प्रोसेस इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ द विक्रम 1601। तो विक्रम 1601 को पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे, नाउ दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ दिस। ठीक है, इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ द, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ विक्रम 1601। नाम क्या है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप, उसका नाम क्या है, विक्रम 3201। जितना भी चिप है, ऑल दीज चिप्स, तो मोस्टली अगर बात करें, जैसे वियतनाम हो गया, ठीक है ना, वियतनाम हो गया, वियतनाम है, ताइवान हो गया, तो दीज आर द हब ऑफ द चिप्स। ठीक है, गुजरात में भी हमारे चिप प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट दैट मच एज इट इज देयर इन दी वियतनाम, इन दी चाइना। ठीक है ना, ऑल दीज कंपोनेंट, जितने भी जो भी डिवाइसेस हैं, है ना, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब में कहीं ना कहीं एवरी इन एवरी डिवाइसेस व्हाट वी नीड, we need semiconductors. Next is portable handheld device servo. Portable handheld device servo, ठीक है, it is developed by the ICMR, that is the Indian Council of Medical Research. ठीक है ना, it will detect the brain injury and internal bleeding in just 2 minutes. So basically अभी हम क्या करते हैं, what we do now, अगर किसी को ब्रेन इंजरी हो जाती है, if anyone is suffering from the brain injury or any brain problem, तो हम उसका क्या करते हैं, एमआरआई करते हैं, एमआरआई। what is the meaning of MRI? Magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging। ठीक, एमआरआई का स्कैन करते हैं ना, दिस एमआरआई स्कैन इज समथिंग व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। So this MRI scan is something which takes a lot of time, or in this time, meanwhile, person can die also. इसीलिए what we have now, we have a portable servo device। ठीक है ना, obviously इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, this will cost you 15 lakhs, this will cost you 15 lakhs, but the best part is that it can deduct the internal bleeding or internal injury in just 2 minutes. So it is something which can save your life. ठीक है ना, this has been developed in collaboration with the Indian Council of Medical Research, that is in short form we call it the ICMR। क्या बोलते हैं उसको, ICMR, Indian Council of Medical Research, और एम्स भोपाल और निमहांस, निमहांस का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। क्लियर हो गया बात, इतनी सी बात समझ गए। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी। सो दिस इज अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, फिर से बड़े डिवाइस के लिए इसको व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट, एक पोर्टेबल डिवाइस को हमने डिस्कवर किया, उसका नाम क्या है, सर्वो। ठीक, दिस इज डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई द इंटरनल ब्लीडिंग एंड ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग या ब्रेन इंजरी कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो इसको क्या करेगा, इसको ये आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है ना, इंटरनल ब्लीडिंग और ब्रेन इंजरी को इन जस्ट 2 minutes। क्लियर, दिस विल कॉस्ट यू 15 lakhs, दिस विल कॉस्ट यू 15 lakh, एंड दिस हैज बीन मेड विद द हेल्प ऑफ द एम्स भोपाल, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है ना, इसकी सहायता से इसको बनाया गया है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। Am I clear? ठीक है, next what we have the Venera D mission, Venera D mission। So this mission has been launched by the Russia। किस लिए लॉन्च किया था रशिया ने, तो रशिया ने क्या किया, बेसिकली रशिया सेंड दिस मिशन टू वीनस। ठीक है ना, वीनस में सेंड करने के लिए इसको अनाउंस किया गया था, है ना, दिस विल बी बिफोर 2036, 2036 यानी कि 2026 से पहले इसको भेजा जाएगा। एंड दिस मिशन विल कंसिस्ट ऑफ, देयर विल बी अ लैंडर, देयर विल बी अ बैलून प्रोब, एंड देयर विल बी ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, लैंडर, लैंडर क्या होता है, लैंडर इज दैट डिवाइस, लैंडर इज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडर, द मीनिंग ऑफ लैंडर इज दैट डिवाइस जो क्या करती है, जो आपका अगर जैसे आप इसे मून पे लैंड किया आपने, ये वीनस पे लैंड किया, तो जो रोलर होगा, यानी कि जो बाहर जाएगा और इधर घूमेगा, ठीक है ना, विच विल टेक द gist of the situation, take the stock of the situation, that is lander। Next come the probe। What is the meaning of probe? The meaning of probe is to identify, to find out। ठीक है, so this device will find out that overall what kind of things are there। Next is the orbital spacecraft। orbital spacecraft मतलब एनीथिंग विच ऑर्बिट्स, तो ये क्या करेगी, ये ऑर्बिट करेगी। ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है, जो चीज किसी के अराउंड घूमती है, उसको हम लोग ऑर्बिट बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ द कलाम 1200 मोटर्स, फर्स्ट स्टेज ऑफ द विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल। विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल फर्स्ट का इसका बेसिकली टेस्ट किया गया है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ऑफ द स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इन हैदराबाद। ठीक है, इसको टेस्ट किया गया है, ये पता होना चाहिए, इट इज अ मोनोलिथिक कंपोजिट मोटर। मोनोलिथिक कंपोजिट मोटर का मतलब क्या हो गया, कि एक ही पार्ट से बनी हुई है, मोनोलिथिक मतलब एक ही पार्ट से बनी है। नेक्स्ट, इसरो ने लॉन्च किया हुआ है सेकंड, इसरो लॉन्चेस द सेकंड पोर्ट टू ऑपरेशन बाय
December 26। देखो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पोर्ट, हमारे पास एक पोर्ट है, कौन सा है हमारे पास, व्हाट वी हैव दिस सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। वी हैव दिस एज अ स्पेस सेंटर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से हमारा दिस इज अ सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है। सो दिस इज आर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, तो यहाँ से हमारी सैटेलाइट लॉन्च होती है, ठीक है। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी हैव, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, नाउ हियर इज द आंध्र प्रदेश। नाउ द प्रॉब्लम इज अब अगर इसको यहाँ से अगर आपको रॉकेट लॉन्च करना है तो पहले आपको इतना मैन्यूवर करके जाना पड़ता है, फिर ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने टूटीकोरिन तमिलनाडु के पास इसको बनाया है, ठीक है, तमिलनाडु के पास हमने एक नया बनाया है इस जगह पे, ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस स्टेप वी हैव मेड अ न्यू वन, उसका नाम क्या है, कुलाशेखरापट्टनम, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, कुलाशेखरापट्टनम, ठीक है। एंड दिस विल बी ऑपरेशनल बाय 2026, 2026 से ऑपरेशन हो जाएगा। इट विल बी इंडियाज सेकेंड सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, इट विल बी इंडिया सेकंड सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन आफ्टर द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय, जो फाउंडेशन स्टोन था, द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नासा ने अपना लॉन्च किया है एक एआई मॉडल, इसका नाम है सूर्या, वेरी इंपॉर्टेंट, नासा लॉन्च इट्स एआई मॉडल नेम्ड एज द सूर्या, ठीक है ना। सूर्या, by the name itself it is very much clear that Surya will going to unravel the mysteries of the sun। तो सन की जो मिस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, उस मिस्ट्रीज को क्या करेगा, अनरेवल कर देगा, उसको अनफोल्ड करेगा, ठीक है, यानी कि विल गोइंग टू हैव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सूर्य। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मिशन था आदित्य, आदित्य L1 मिशन, ठीक है, आदित्य L1 मिशन। सो दिस आदित्य L1 मिशन वाज आल्सो लॉन्च्ड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग, टू हैव द नॉलेज अबाउट द सूर्य, ठीक है, आदित्य L1। Why it is called as the Adit L1? Because it has been placed near the Lagrange point. So Lagrange point है, वहां पे इसको place किया गया था, hence it is known as the Aditya L1, ठीक है। Now this Surya AI, it is jointly developed by the Impact, that is the Integrated Implementation and the Advanced Concept Team और IBM, ठीक है ना। इन दोनों कंपनियों के माध्यम से, इन दोनों कंपनियों के माध्यम से कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया गया था, याद रखिएगा सूर्या, ठीक है। सूर्या इट इज एन एआई मॉडल ऑफ नासा एंड आदित्य L1 मिशन। L1 means Lagrange point. It is a type of position. Lagrange point क्या होता है? It is a type of position. समझ में आ रहा है सारी चीजें? मैं तेज तो नहीं चल रहा हूँ? Please confirm me once. Am I fast? I'm okay. Confirm me once. ठीक है? So I told you this, that overall the NASA has built an AI model named the Surya. Okay, and this Surya model will going to fetch the information near the sun. Clear? And apart from that, we have the Aditya L1 was launched recently. Earlier it has been launched. Where the L1 stands for Lagrange point. Lagrange point, it is a situation. It is a situated point. Basically 5 points होते हैं. In that Lagrange point, it has the equally distributed force. So overall, it will reduce the cost of the fuel. That is the only purpose. And the purpose of shifting the overall this satellite launching station from the Sriharikota, ठीक है, Andhra Pradesh to the Tuticorin in Tamil Nadu, that was also to save the fuel, ठीक है ना, to reduce the maneuverability. Clear? Or and there's a particular term for it. We called it as the dog-like maneuver. So what is the meaning of maneuverability? The meaning of maneuverability means how skillfully you can perform an act. ठीक है, how skillfully you can perform an act, that is the meaning of maneuverability. Now it is moving from, for example, यहाँ से वो move कर रहा है, ठीक है, and ये it is shifting from here to here. Is from Andhra Pradesh Sriharikota to Tamil Nadu to Tuticorin, Tamil Nadu. ठीक है, so this is the maneuverability. So the term they have given there, that was there in news, was dog-like maneuver. ठीक है, how many of you have read the newspaper? Just let me know. How many of you have read the newspaper or you have gone through the website of the PIB or All India Radio? हाँ, ऐसा कितने लोगों ने किया है बताइए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, डिटेल्ड 3D मैप ऑफ द कॉस्मिक डस्ट ऑफ द मिल्की वे वाज क्रिएटेड, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या हुआ है, द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, Harvard Research Institutes and of the observational science, they have created a 3D map of the cosmic dust of the Milky Way. So cosmic dust क्या होती है, the dust that is there in the cosmos, इस पूरे ब्रह्मांड में जो dust है, that is the cosmic dust, ठीक है। मिल्की वे क्या है, मिल्की वे is the name of the galaxy that we are living in, ठीक है। And apart from that, the पड़ोसी galaxy that we have, the neighboring galaxy we have is the Andromeda, Andromeda,
ठीक है। एंड सन कहाँ पे आता है? सन जो होता है, सन इज ऑन द ब्रांच ऑफ द हीलियन ब्रांच, है ना, हीलियन एक ब्रांच होता है, उस पर सन है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। And apart from that, when we talk about the sun, yesterday when I told you the two reactions, fusion and fission, okay, now these two are very simple reaction. The moment you talk about the fusion, the meaning of fusion is two particles are coming closer to form a new particle. In this case, hydrogen and hydrogen coming closer to form the helium. Okay, so that is the fusion reaction. Fission is when two particles are splitting apart. ठीक है ना? And fusion has more power. So in the moment you talk about the sun has the fusion reaction. ठीक है? And all the nuclear fuel we use in world, it has the fission reaction, which is not that much far powerful as the fusion one. Clear? One more thing is in in atom bomb we have the reaction of this fission. In nuclear power fuels we have the reaction of this fusion. But the moment you talk about a hydrogen bomb, in that case there the process of the fusion will take place. So to trigger a hydrogen bomb you need to trigger first the uh, atom bomb. Okay, so atom bomb, it is like a triggering point or threshold point for the hydrogen bomb to take place. Okay. Next, there's only also one very important news was regarding the transplantation. So, for example, you have seen many kind of transplantation, from human to another species. So, in this time, what has been done that China has genetically modified pig lung. So, what China has done? So, first, it has grown a lung. ठीक है ना? So this lung is not a normal lung. It is a genetically modified lung. ठीक है ना? Pig lung थी. And this has been inserted. This has been put in the body of a human. And this human was a 39-year-old brain dead. So the moment of brain dead is he was in a coma में था, he was in coma, and then we have placed it, they have placed it, ठीक है ना? And overall the patient was alive and the body functioned up to 9 days. So that was a miraculous thing. The body was functioning, so it was not idle, ठीक है ना? And one more thing, in the moment you talk about the judiciary or the moment you talk about the death, and in terms of judiciary or in terms of the judicial wing, so judiciary consider a person dead only when the brain dead. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल उसका हार्ट बीट चल रहा है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल उसका उसका ब्रेन चल रहा है पर हार्ट बीट बंद है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो गया, मतलब ऐसा कुछ भी, तो इवन इन दैट केस इट ही विल बी कंसीडर्ड लाइफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ओवरऑल दिस काइंड्स ऑफ जो भी चीजें होती हैं जीएम, genetically modified. What is the meaning of genetically modified? इसको GM बोलते हैं, short form. For example, we have the GM crop. Okay. And one more thing, the moment you talk about the GM crop, so in India, we have BT brinjal only. BT brinjal. BT brinjal मतलब बैगन. ठीक है. So in India, we have only given permission to the BT brinjal as a genetically modified crop. BT cotton जो है ना, BT cotton, it is still in the pipeline. So this has not been came on table. It is on table till now, not has been came on land. So it is in the process of land to lab. Next is the nanotechnology based device developed early detection of the Parkinson disease. So जो Parkinson disease है, ठीक है ना? Parkinson disease. Yesterday also I told you about the Alzheimer. ठीक है ना? Alzheimer क्या होता है? Basically Alzheimer is a kind of a disease where you tend to forget the things. ठीक है ना? The next step of the Alzheimer is dementia. ठीक है ना? Dementia. So dementia is the next step of the Alzheimer, where you है ना, where you forget everything. Dementia. ठीक है? So it is a this Parkinson disease. It is a neurological disorder. It is a neurological disorder, and it means it is associated with the neurons. ठीक है ना? Your bodily function, and basically this there's a device that they have developed. Who has developed? The Indian Institute of Nanoscience and Technology, Mohali, Autonomous Institute of Department of Science and Technology. This has been developed a nanotechnology based device. ठीक है ना? So basically, what this device will do? This device is going to help in the early detection of the Parkinson disease. ठीक है ना? So it is not talking about the treatment of it. Okay, there are many disease, many chronic disease that of which we don't have the treatment. For example,
डायबिटीज, वी हैव ब्लड प्रेशर, है ना, ओबेसिटीज. सो बट यहाँ पर बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट the detection of it, early detection of it. World's first functioning viral genome created by the AI. ठीक है ना? So world first functioning viral genome that is created by the AI. So this has been created by the Stanford Research Institute and Arc Institute. It is the world fully AI viral genome. Yeah, means it has been, this genome has been created by the AI. That is it want to say. नाम क्या है? The name is the Evo AI. Evo AI. Now here comes the big thing, and whenever topic comes from the science background, okay, so there you also need to understand the basic biology behind it, basic science behind it, because the question is not generally asked from that current affairs. It has also been asked, okay, na, from the concept behind it. Clear? So for example, this AI that has been created, sorry, this genome that has been created by the AI, what it will do, it will infect and it will kill the bacteria. It will infect and it will kill the bacteria. Now, in this case, first of all, you need to understand what is the bacteriophage. What is the meaning of bacteriophage? What is the meaning of bacteriophage? When a virus infect a bacteria, then it forms the, ये क्या हो गया? ठीक है भी, डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट हो गई. एक मिनट, मुझे लगता है कि डिस्प्ले ठीक है भी. हाँ ठीक है भी. Yeah. So what I was saying, yeah, now it is okay. Okay. What I was saying, when the virus infects the bacteria, then it forms the bacteriophage. The bacteriophage, it is a state. Bacteriophage, it is a stage in which when the virus infect bacteria. Virus की बात किया जाए तो these are the inert bodies. Virus क्या है? Virus are the inert bodies. ये inert होती हैं. So whenever you talk about virus, so it is a non-living body. Virus is a non-living body. They can be alive. So it is a non-living thing, but they can become alive whenever they come in the contact of a living thing. ये याद रखना है. अगर कभी ऑप्शन में it is a living thing, no, virus is not a living thing. ठीक है ना? Which can infect and kill the E. coli bacteria. तो ये जो बना है genome, ठीक है ना, with the help of the AI, they can infect and they can kill the E. coli bacteria. Now this E. coli bacteria is also important. This E. coli bacteria was in news recently in the Mahakumbh. So in the Mahakumbh, people were talking about that in Ganga water, in the river Ganga water, they have found the E. coli bacteria. This E. coli bacteria is mostly finds in the feces. तो जो feces होते हैं, यानी कि जो excreta होता है, ठीक है ना, जो excreta होता है, excreta of the human body. In the excreta of the human body, we find this virus. ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए. नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल रॉकेट, उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है. इट इज टेस्टेड बाय द स्पेसएक्स. इट इज द 10th इंटीग्रेटेड टेस्ट. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने गगनयान मिशन के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गगनयान मिशन? गगनयान, द मीनिंग ऑफ द गगन इज स्पेस. So Gaganyaan mission, this means that this mission will going to lead the humans in space. This is an Indian mission. ठीक है. And for that, for the practice of that, हम क्या कर रहे हैं? We have made the Vyom Mitra. So Vyom Mitra क्या है? It is a half humanoid robot. So this robot looks like the human, hence we are calling it as the half humanoid robot. And this will first fly into the space, and then we'll have some understanding. और उसके बाद then in the Gaganyaan mission will send some participant, send some astronauts. Clear? समझ आ रहा है? Send some participant. Type yes if everything is okay और समझ में आ रहा है आपको. ठीक है? So that is the Vyom Mitra. तो Vyom Mitra क्या है? It is a robot, and we're going to send this robot in the space. ठीक है ना? And this is also known as the unmanned test flight. इसको बोलते हैं, for example, UAV. Maybe you heard about the UAV. UAV full form क्या है? Unmanned aerial vehicle. What is the full form of UAV? The meaning of the UAV is unmanned aerial vehicle. Means जो drones होते हैं, drones, ठीक है ना, we call these drones as the unmanned aerial vehicle. ठीक है ना? तो व्योममित्र AI is a half humanoid robot. It is designed by the
इसरो, सो इसरो हैज डिजाइन दिस। इसरो ने क्या किया, इसरो ने इसको डिजाइन किया है। क्लियर। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जो होगी गगनयान की हाफ ह्यूमैन रिमोट की, इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस बाय दिसंबर 2025, यानी कि 2025 तक दिसंबर में जो व्योममित्र है उसकी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ द यूरेनस 29th मून। तो यूरेनस जो है 29th मून, उसकी हम लोग यूरेनस की 29th मून की हम डिस्कवरी कर रहे हैं। ठीक है ना। सो दिस इज अनाउंस बाय द जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है ना, दैट यूरेनस में, इन द यूरेनस वी हैव फाउंड द 29 मून, 29 moon. And what is the name of it? The name of it is S 2025 UAI, S 2025 U1. ठीक है ना। And basically overall एक टीम थी, that is the by the Southwestern Research Institute. They have identified this moon on the February 2nd. सीधा की बात। अब हम बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइज में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। Anyone has any problem? Now we'll talk about the defense exercise. Hmm? If anyone has any problem, समझ में आ रही सारी चीजें? ऑल क्लियर? ठीक है, एवरीथिंग ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में। ठीक है ना, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस वी हैव। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव, फर्स्ट वी हैव द नेवल एक्सरसाइजेस। ठीक है ना, नेवल एक्सरसाइज कौन सी है? स्लीनेक्स। स्लीनेक्स, सो स्लीनेक्स इट इज अ नेवल एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन द कोलंबिया एंड द श्रीलंका। तो बेसिकली इंडिया के बीच में होते हैं, इंडिया, कोलंबिया एंड श्रीलंका, दीज है ना, ऑल दीज थिंग्स वी कंडक्ट द स्लीनेक्स एक्सरसाइज। क्लियर। दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड फ्रॉम द 14th of August to 18th of August 2025. ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव इज द ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार, now this exercise has been conducted between the Egypt, India and the United States. Egypt, India and United States. You know, with the United States we can also conduct the Yuddha Abhyas. Yuddha Abhyas. So Yuddha Abhyas, it is also an exercise which is conducted between the India and United States. One more thing I need to talk about the France. So with the France, we also conduct some exercises. For example, the desert night. The desert night, it is the exercise that has been connected between the India and France. Again, the screen is causing a little bit problem. Okay, बहुत बात करना है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो desert night, गरुण, वरुण, शक्ति and लापरो use. गरुण, वरुण, शक्ति and लापरो use. ठीक है ना। So these are the exercises of France that India do with the France. ठीक है ना। desert night, गरुण, वरुण, शक्ति, लापरो use. Clear? ठीक है। Egypt. ठीक है। Egypt. In Egypt, you will remember from there the Nile River, है ना, the Nile River passes through the Egypt. And apart from that, what you have? The Nile River, it is consist of the kind of two rivers. ठीक है। तो नाइल रिवर जो होती है, ब्लू नाइल, रेड नाइल, ठीक है ना, ब्लू नाइल, रेड नाइल, ओरिजिनेट फूड, वन इज ओरिजिनेट फ्रॉम द विक्टोरिया लेक, वन फ्रॉम द खार्टूम सुदान। ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए था। नेक्स्ट इज दी युद्ध अभ्यास। जैसे मैंने बात किया युद्ध अभ्यास के बारे में, देखो यहाँ पे आ भी गया युद्ध अभ्यास। इट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज दैट टेक प्लेस बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिका। सो युद्ध अभ्यास, इट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज दैट टेक प्लेस फ्रॉम द इंडिया एंड अमेरिका। क्लियर। सो दिस टाइम इट हैज बीन टेकिंग प्लेस इन अलास्का। ठीक है ना। फ्रॉम 1st to 14th of September. From 1st to 14th of September, this exercise has been taken place. From 1st to 14th of September. Clear? From 1st to 14th of September. Now, Maitri, very important, Maitri. Now, Maitri exercise, this is conducted between the India and the Thailand. Maitri exercise between the India and Thailand. Between India and Thailand, Maitri exercises. Now, this time it has been connected in the place of the Omroi, Meghalaya.
इतना सबको पता है ना, एवरीवन नोज अबाउट इट, कि जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, ऑल दीज डिफेंस एक्सरसाइजेस, दीज आर कंडक्टेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज मिलिट्री। डिफरेंट कंट्री की जो मिलिट्री होती है उसके बीच में डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। वो वाई क्यों कंडक्ट की जाती हैं? सो दैट इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, वी आर प्रिपेयर इनफ। ये कुछ भी हो जाएगा ना, वी आर प्रिपेयर इनफ, हमें अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस बिटवीन द इंडिया एंड ग्रीस। तो इंडिया और ग्रीस के बीच में वी हैव कंडक्टेड मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, इट इज इन दी मेडिटेरियन सी। ये पता होना चाहिए ग्रीस के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया और मोरक्को के बारे में। इंडिया और मोरक्को के बारे में, सो दिस इज द मिसलेनियस न्यूज नाउ। इंडिया और मोरक्को, दिस इज अ मिसलेनियस न्यूज। अगेन इट इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम आई थिंक। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया और मोरक्को के बीच में डिफेंस जो मिनिस्टर थे हमारे, दैट इज राजनाथ सिंह, ठीक है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट इज द एमओयू, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? मैंने उस दिन बताया भी था आपको, जो एमओयू होता है उसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ दिस एमओयू व्हिच इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज। नाउ दिस इज नथिंग जस्ट द समिट और मीटिंग। तो किसी भी दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई पैक्ट होता है, if we are having any pact between the two countries, if we are having any agreement, ठीक है ना, एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज दी एमओयू। ठीक है, सो इफ वी आर हैविंग एनी एग्रीमेंट, एनी पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, सो वी कॉल्ड इट एज दी एमओयू। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो दिस हैज बीन साइंड इन दी रबात। क्लियर? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, राजनाथ सिंह हैज अनाउंस्ड, ही हैज अनाउंस्ड दी इनॉग्रेशन ऑफ द टाटा एडवांस सिस्टम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यानी कि टाटा टाटा एडवांस सिस्टम की डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसको ऑर्गेनाइज किया कहाँ पे? मोरक्को में। ये इंडिया की पहली ओवरसीज फैसिलिटी होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस विल बी द लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ मोरक्को। तो ये हमें याद रखना है कि मोरक्को का ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और इंडिया का क्या है? इंडिया का बाहर का सबसे बड़ा प्लांट है। क्योंकि मैं इसको सीख करता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। वेट अ मिनट, लेट मी फिक्स इट, लेट मी फिक्स इट। ठीक है ना, इट इज ओके। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये बात की यहाँ पर मोरक्को के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नाउ वी टॉक अबाउट सूर्य, सूर्य द्रोणानंद। ठीक, इट इज बेसिकली, ये क्या है? इट इज अ ड्रोन कॉम्पिटिशन दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सूर्य कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। जो सूर्य कमांड है इंडियन आर्मी की, उसके कोलाबोरेशन से हमने ड्रोन, सूर्य ड्रोनानंद, इसको हमने ऑर्गेनाइज किया था। इट इज अ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सबके मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? दिस इज व्हाट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इन दी स्पीति वैली इन दी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वी हैव इज दी ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत, इट इज अ रिलीफ और असिस्टेंस प्रोग्राम फ्रॉम द डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। ठीक है ना। एंड दिस प्रोग्राम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, हैज बीन ऑपरेशन इन दी रीजन ऑफ द पंजाब, कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की भी एक और न्यूज देखी है, दैट इज द दिस ड्रोन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, सेकंड एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अंद्रोथ इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। तो सेकंड एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट, उसका नाम क्या है? आईएनएस अंद्रोथ। इसको इंडक्ट किया किसमें? इंडियन नेवी में। इट इज बिल्ड बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। क्लियर? इसको इंडक्ट किया था। इंडक्ट किया मतलब इंट्रोड्यूस किया हुआ। फास्ट पेट्रोल वेसल्स आईसीजीएस, ओके, आदिमा इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये कहाँ पर उसके गया था? पारादीप पोर्ट में, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और पोर्ट है, चांदीपुर पोर्ट। ठीक है ना। वेन एवर यू टॉक अबाउट ओडिशा, आपको क्या रखना है? ओलिव रिडली टर्टल, ओलिव रिडली टर्टल। ठीक है ना। तो ओलिव रिडली टर्टल क्या है? इट इज द स्टेटस ऑफ द ओलिव रिडली टर्टल इज वल्नरेबल। इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। दीज आर द टाइप ऑफ टर्टल्स। ठीक है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, and apart from that, what we have here, you need to understand the term aribada. Aribada, what is the meaning of aribada? So aribada, it is a type of a mass nesting that is performed by the olive turtle. So there's a particular time of the year
where they come and they breed, ठीक है ना, they breed in groups, and that is known as the Arivada, है ना, and olive turtle. And what is the IUCN status of olive turtle? It is the vulnerable, ठीक है, it is vulnerable. So this fast petrol vessel, Adima, has been built by the Goa Shipyard Limited. Overall, this is the length of it is 51 meters long and approximately 320 tons. Next बात करते हैं, it is the newest naval base of the INS Aravali. तो basically commission हुआ है newest naval base INS Aravali में. It is there in the Gurugram, Haryana. Launching of the INS Udaygiri and INS Himgiri. So basically these are the two state-of-the-art multi-mission stealth frigate. What is it? First of all, what is the meaning of state-of-the-art technology? The meaning of the state-of-the-art, ये जो शब्द लिखा हुआ है, the meaning of the state-of-the-art. State-of-the-art मतलब कि this has the highest technology. So whatever technology we are going with right now, उसमें से सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट. द कंप्लीट वर्ड इज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है, यानी कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है. नेक्स्ट, इट इज अ मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट. कैसा है ये स्टेल्थ फ्रिगेट? सो फ्रिगेट मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ फ्रिगेट इज दैट काइंड ऑफ अ शिप. Stealth means that it is not easily identifiable. You may not easily identify it. ठीक है ना, that is meaning of stealth. यानी कि वो छुप के रहेगा. You know, and that is the only concept. For example, we are shifting from the diesel submarines to nuclear powered submarines. So first of all, the main reason is if we are using the diesel submarines, so every time we need to come on the surface to refuel it. ठीक है ना? It will definitely increase the cost, and also apart from the cost, right now we are very much concerned about our security. So if in the area of the enemy you are coming on the surface again and again after some time, है ना, so you'll be easily visible. You are very much prone. ठीक है? If you are using the nuclear submarine, though you at that time you don't need to come on surface, है ना, 6-7 महीने 8-10 महीने आराम से अंदर बैठो, चिल करो वहां पे. सो आइनस उदयगिरी एंड आइनस हिमगिरी इनको इंट्रोड्यूस किया गया था. नेक्स्ट बात करते हैं बाज आंख. बाज आंख, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाज आंख? बाज इज ईगल. ठीक है ना, बाज इज ईगल. तो बाज आंख, द ईगल्स आई. बाज आंख, इट इज एन एंट्री ड्रोन सिस्टम. इट इज एन एंट्री ड्रोन सिस्टम बेसिकली हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द तारापुर पंजाब. ठीक है, तो इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द तारापुर पंजाब. ठीक है ना, for entry drone system. Basically, if there's a border area, in these border area, there are first of all what we say, trespassing happens there. Trespass. So trespassing happens. What is the meaning of trespass? TRESS, trespass. Trespass means because these borders are porous. These borders are porous. What is the meaning of porous border? So they are not that much overall very highly secured. ठीक है, so people can come and go. ठीक है, and apart from that, ये पंजाब वाला तो फिर भी secure in compared to if I talk about the Bangladesh, तो वो तो बहुत ज्यादा porous है. ठीक है, so what we have, so there people used to send a lot of the drugs, है ना, drug trafficking or arms smuggling, these things are happening. So these people are also using the technology in this section. ठीक है, technology people are using in everywhere. ठीक है ना, whether it uh, talking or whether it is telecommunication, whether studying, research and development, R&D, and other in these things. So basically, these are also things. So to curb this drug trafficking and arms smuggling, ठीक है ना, people of the Punjab or the Punjab police, basically it is the first stage to deploy such kind of system in border district. Clear? Next बात करते हैं, we have the basically medium range Agni Prime missile. Agni Prime missile in short form it is known as the Agni P. Agni P. So Agni P, that is the Agni Prime missile. ठीक है ना? So the successful launch of the Agni Prime missile has happened from the Chandipur, Odisha. ठीक है ना, चांदीपुर उड़ीसा. सो बेसिकली अभी मैंने बात किया था ना, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट चांदीपुर उड़ीसा, दैट देयर वी फाइंड दी ऑलिव ग्रीन टर्टल्स, है ना, आयुषियन स्टेटस वल्नरेबल, अरीबाड़ा इज द मास नेस्टिंग. Basically in Odisha we have the three ports. We have चांदीपुर उड़ीसा, we have the गहिरमाथा बीच, we have the रसकुल्ला बीच. तो तीन बीचेस है वहां पे. रसकुल्ला बीच, चांदीपुर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रसकुल्ला ऐसे कुछ नाम है इसका. ठीक है, रसकुल्ला एंड चांदीपुर उड़ीसा, और है ना अरीबाड़ा, नहीं है
दृष्टिकुंड, चांदीपुर दिशा और गहिर माथा, ठीक है ना, गहिर माथा, ये 3 बीच है वहां पर, थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। वी हैव पुरी टेम्पल देयर, है ना, जगन्नाथपुरी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय दी DRDO, that is a Defense Research Development Organization, ठीक है ना, अग्नि प्राइम मिसाइल, बेसिकली this prime missile, what is the specialty about this missile is that you can launch this missile from the rail network also. So the deployment is something which is very feasible, है ना. So here we are talking about it because of its maneuverability, because of its feasibility. You can launch it from the rail network also. Clear? So that is means this will going to reduce the overall effort. Next, 3D air surveillance radar Lanza N commission for the Indian Navy. तो basically इसको commission किया गया है, ठीक है ना. This has been made in the collaboration with the Spanish defense system, ठीक है ना. And it is the first indigenously built 3D air surveillance radar. तो basically 3D air surveillance radar है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की द्वारा बनाया गया है. और अभी हमने देखा था दैट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैज ओपन इट्स फर्स्ट दैट इज द out of India first facility of for the defense equipment manufacturing in Morocco, ठीक है. तो ये तो भी थोड़ा सा याद रखना, और मोरक्को की वो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है. आइनस कदमत अराइव इन पापा न्यू गिनी. तो पापा न्यू कहाँ पे है, जो हमारा आपका ओशियानिया है, यानी कि जितने जो हम ग्लोबल साउथ के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर है. यू मे सी द मैप ऑल्सो, ठीक है ना. पोर्ट मोर्सबे which is the capital of the Papua New Guinea. And Papua New Guinea, if I talk about the Papua New Guinea, it is the largest island, ठीक है, यानी कि जो इस एरिया में लार्जेस्ट आइलैंड की कैटेगरी में ही आता है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है. सो ओवरऑल this is something you need to know. Next is the a very important one. This one is very important. That world's first tri-service women circumambulation expedition समुद्र, नाम क्या है उसका, समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रॉम द गेटवे ऑफ मुंबई. यानी कि इसमें क्या होगा, सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमब्युलेशन. Circumambulation means some women will be there. मतलब circumambulation means you are going to cover the whole round of the earth. पूरे दुनिया का एक राउंड लेके आओगे, ठीक है. So that is the meaning of circumambulation. So this is a tri-service women's circumambulations. Name क्या है? What is the name they have given? Samudra Pradakshina. ठीक है. This has been overall initiated from the gateway of the Mumbai, and this overall the flag hosting, the flag off was done by the Defense Minister Rajnath Singh from the gateway of the India, ठीक है ना, in the Arabian Sea on 11th of September 2025. It is the first of its kind in the world. There will be 10 women, and these 10 women will be on this round for at least 9 months. ठीक है ना. And meanwhile, they are also going to visit the 4 ports, ठीक है ना, the port of the Australia, New Zealand, Canada, Port Stanley, and Cape Town in South Africa. Next, we have MiG-21. MiG-21, you see, we have seen a lot of the disasters, a lot of the mishappening from this aircraft, MiG-21 fighter. Now, we have decided to discontinue this fighter as a MiG-21. We have seen, so, and the moment whenever we a plane crash, so it is not only the destruction, or it is not only the waste of the resources, it is also the waste of the life. And overall, all those years, the government has trained that particular defense personnel. So that is something we also lost apart from this aircraft. So hence they have decided to discontinue this one. This has been inducted in 1963. So almost overall 63 years have been completed for it. ठीक है ना. Do we have time? या थोड़ा सा टाइम है, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं बस, then we'll wind up. Next we have obituaries, ठीक है ना. obituaries को देख लेते हैं. So first is the Jim Lovell, ठीक है ना. So he died. So he was the astronaut, and he was also the commander of the Apollo 13 mission. Apollo lunar mission, ठीक है ना. Apollo, whenever you heard about the Apollo term, Apollo is of USA. अपोलो किसकी होती है? अपोलो इज ऑफ यूएसए. एंड व्हेनेवर यू हर्ड ऑफ लूना होती है रशिया की. रशिया हमेशा लूना उड़ाता है, ठीक है. सो ही वाज द फर्स्ट मैन टू ट्रैवल टू मून ट्वाइस, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज नेवर लैंडेड ऑन इट. Next is the Lord Suraj Paul. He was a British industrialist, and he also hold the position of the Deputy Speaker of the Lok Sabha. He has also died. D.D. Lapang, former Chief Minister of the Meghalaya, he was also died there.
and he was the longest serving. He was the longest serving politician in मेघालय. ठीक है ना. Just remember the exercises we have done. अभी हमने exercise की थी उमरोई in मेघालय. याद कर सकते हो? Anyone comment me? Next, Sardar Hoffman, he was the first recipient of the Sangeet Natak Academy Award. He was the first recipient of the Sangeet Natak Academy Award and Rukmani Devi Award in 1996. He died now. Next, the very famous, the Dicky Bird. So Dicky Bird, he was an umpire in the cricket and now he has also died. Okay, na? And remember the Dicky Bird plan, the Mountbatten plan is also known as the Dicky Bird plan. Can you relate this thing to? Huh? The Mountbatten plan is also known as the Dicky Bird plan. Hmm? So these were some of the schemes. These were some of the things. Now we are left with the अच्छा अभी काफी कुछ है यहाँ पे तो. चलिए स्कीम्स भी देख लेते हैं, थोड़ी सी बची है उसमें. बस फिर नेक्स्ट में हम यहाँ से कवर करेंगे, कहाँ पे स्पोर्ट्स से कवर करेंगे. ठीक है ना. 4-5 स्कीम बची है, उसको देख लेते हैं. सो सम इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स व्हाट वी हैव. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. सो बेसिकली विकसित भारत क्या है? बेसिकली देयर इज अ प्रोविजन की एक ऐसा बोला है कि हम 2047 में विकसित भारत बन जाएंगे, है ना. द रीजन इज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. सो देयर whoever will get the job. दोस्तों क्या है ये, इसको समझ लेते हैं. बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ incentive. So whoever applicant is there from and who are getting job from 1st of August 2025 to 31st of July 2027, इस बीच में अगर जिसको जॉब मिलती है तो गवर्नमेंट विल गोइंग टू पे 15,000, ऐसा कुछ इसमें बोल रहा है. नेक्स्ट इज द अंगीकार कैंपेन. सो वो बेसिकली अंगीकार कैंपेन. सो दिस इज रिलेटेड टू द आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0. ठीक है ना. एंड दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द 17th of September to 27th of September. So there people will going to create the door-to-door awareness campaign, है ना, housing campaigns, overall है ना, PM campaign होगी kind of. Next is the Shine Initiative. What is the Shine Initiative? Science and Health Innovation Next Generation Initiative. ठीक है ना. What is it? Basically overall this is to इसका aim क्या है? To highlight the contribution of the students in the field of the health and the biomedical research. ठीक है ना, of the ICMR, that is the Indian Council of Medical and Research. Clear? So overall, the students that will going to participate here, overall 13,150 students will going to participate from class 9 to 10. So it is a kind of a awareness campaign where they gonna tell the students what are the contributions of the ICMR. ठीक है ना, in the field of the health science, ये सारी चीजों में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, so that they can learn and they can develop themselves accordingly. Next is the national geothermal energy policy. So overall कैसे एनर्जी निकलेगी, and it is about that. First of all, what you need to understand that this policy comes under which ministry? This policy comes under the renewable energy ministry. And apart from that, we have the target of net zero by 2027. What is the meaning of net zero? Net zero मतलब कि जितना हम कार्बन इमिट करेंगे, है ना, whatever amount of carbon we are emitting, we are going to suck in the same amount of the carbon. So hence we are at the position of net zero. If I talk about the overall the position of the belt where the in India we found this geothermal energy. So first of all, Ladakh region we find. So in the Himalaya region we find. In the Cambay basin we have also find. And apart from that, in the Aravalli range. Again, in Aravalli range, we also find the black soil region there, Mahanadi basin, Godavari basin. So overall, the basin area that are there. Next, Ek Bagaya Maa Ke Naam. So this is also a campaign. Here in this campaign, it is a campaign organized by the ओवरऑल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओवरऑल क्या करेंगे, हेल्प करेंगे जो भी प्राइवेट वुमेन्स हैं, यानी कि जो भी सेल्फ हेल्प वुमेन्स हैं. ठीक है. सो वट एवर प्राइवेट लैंड दे हैव, उसको यूटिलाइज करने में उसकी हेल्प करेंगे. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस नहीं है. नेक्स्ट, विश्वकर्मा युवा उद्यमी रोजगार योजना. तो इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली दे गोइंग टू प्रोवाइड, द राजस्थान गवर्नमेंट गोइंग टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन टू द यूथ फ्रॉम द 18 एज, है ना, फ्रॉम द एज ऑफ द 18 टू द एज ऑफ द from the age of the 18 to the age of 45. ठीक है ना. Now apart from that, what you need to understand is overall जो लोन का जो अमाउंट है, that is the 2 crore 2 CR. So 2 CR is the overall amount that we have. Overall amount 2 CR. One more thing you need to understand is
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? ये पता होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? नाउ the moment we talk about the interest subvention scheme, this means, for example, I have given you a loan, some amount of loan at the interest rate of 10%. ठीक है. Now later on I realize कि नहीं, I want to give you some help or some relief. Now what I have done, I have reduced the rate of the interest. So from 10% I have reduced it to the 5%, for example, or to 7%. So 3% of the interest subvention you have got. So that is the meaning of the interest subvention scheme. Okay, that is the meaning of interest subvention scheme. Next is Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana. So this Yojana was organized by the Haryana government. ठीक है ना. Here overall the purpose is to secure the dignity of the women. ठीक है ना, both married and unmarried. ठीक है ना. So overall they will going to give the monthly amount of 2100 rupees. ठीक है. As if your family's annual income is less than 1 lakh rupees, तो आपको 2100 रुपए मिलेंगे. So kind of a रेवड़ी है. ठीक है. Next, we have the Anva Colonel scheme. Then this has been launched by Tamil Nadu. Tamil Nadu, remember, we talked about the Kula Patnam Tuticorin, है ना, the new satellite launching station. So basically, this scheme has been launched for both the parents or basically जो parents हैं, ठीक है ना, यानी कि this has to secure the future of the orphans who have lost their parents, clear, and vulnerable children. So overall, those students or those persons, those children who have lost their parents, this is scheme for them. So here they will going to give them 2000 rupees per month as a educational assistance. Clear, Vivat? Now, so we have done with the class. So now you may tell me that overall, uh, how was the class and overall, if you have any faced any difficulties. And so first, before that, tell me that how many of you have read the newspaper today? How many of you have read the newspaper? Tell me. Hmm? Mark your presence by type yes if everything is okay and if you have got the concept. Type yes. If you've got the concept, type yes. Have any doubt? Hmm? कोई doubt है? Okay, I believe that no one is having doubt because you're not giving the reply. So, ठीक है. Tomorrow we'll meet most probably in the same time. Clear? And today itself, I'm going to share this PDF. ठीक है ना? Or any additional inputs. If I'm going to add in this PDF, I'll give it tomorrow. If ठीक है, definitely you're going to have this video, no problem at all. So just keep revising the things, go through the video lecture again, and if you have any doubt, just text me in the WhatsApp or in the that comment section. Okay. So okay, then I would love to. Okay, sir. House of Plants. Thank you for joining the class. So House of Plant and everyone else, I'll meet you tomorrow on the same time, same show, same time, same place. Till then, take a goodbye. Thank you. This is Matiwari signing off. Jai Hind, Jai Bharat.